Bhagavatam, 3rd canto, chapter number 5, titled as Vidura's Talk with Maitreya Rishi, text number 24. Shloka is on your screen, you can repeat after me. Sava Esha Tada Drashta Na Pashyad Drashyam Ekarad Mene Asantam Ivatmanam Supta Shaktir Asupta Draka. So I recite the whole shloka for benefit of all of us. Savaish tada drashta napasatyad drashya ekara mene asantam ivatmatma supta shaktir asuptadra. Translation. The Lord, the undisputed proprietor of everything, was only seer, was the only seer. The cosmic manifestation was not present at that time, and thus he felt imperfect without his plenary and separated part and parcels. The material energy was dormant, whereas the internal potency was manifested. तो यहाँ पे we can see that Maitreya Rishi is explaining to Vidurji. Vidurji inquired from Maitreya Rishi that can you please tell me about Lord Krishna, his various pastimes, various incarnations, how he creates this universe, how he maintains, how these things are going on, which you heard from Lord Krishna himself before Lord Krishna departed. And I want to know that same knowledge which you learned from Lord Krishna. So Maitreya Rishi is glorifying Vidurji, and then he's saying that I'm going to tell you all the pastimes of Lord, because these pastimes of Lord's are so beautiful, Lord Krishna's pastimes, that it removes all the misery. There are three advantages of hearing Krishna Katha. There are two types of Krishna Katha. One is by Krishna and another is about Krishna. By Krishna is Bhagavad Gita and about Krishna is Shrimad Bhagavatam. So when you hear this, what happens? First of all, Virakti Anyatra Tatha. So we get detached from material attachments. Second thing is that we get attracted to pastimes of Lord Krishna. And third is that we progress, we develop love for Krishna more and more. Our bhakti becomes more and more. So Vidurji is hearing Krishna Katha from Maitreya Rishi, and yesterday we learned that in the beginning of the description, Maitreya Rishi told Vidurji that at the beginning of the creation there was only one person. Who was that? Lord Krishna himself. Bhagavan eka asedam agra atmanam vibhuhu. The personality of Godhead, he was only by himself. And then Krishna expanded. And we talked about expansions and plenary expansions. So I think I can share an image, expansions of Lord Krishna. I have an image here for benefit of all of us. Here is the expansion of Lord Krishna. And we can see that expansions of Lord Krishna in this picture. Here is the picture actually. I hope you all can see this picture. In this, Lord Krishna expands himself into
expansions and planetary expansions. So here is the picture. It's somehow not downloading. Here is the picture. Let me expand it. So here. So Srila Prabhupada write in the purport how Krishna's manifestation takes place. It is Sri Krishna, cause of all causes, then comes Balram, then Vasudev, Sankarshan, Pradyumna, Aniruddha, then Narayan, then from Narayan comes Vasudev, Sankarshan, Pradyumna, Aniruddha, then Mahavishnu, where Bodhakshay Vishnu and Kshirodakshay Vishnu, like that. These are the expansions of Lord Krishna. So we can see that I wanted to send this picture yesterday to all of you. I'm going to send it today. I hope I can send. Parulji and Kadambariji are here online, so I wanted to send them this picture. This is on my desktop actually. Let me send it first. The expansions of Lord Krishna. Oh, I downloaded it, but somehow Krishna's expansion here. Sure. Oh, they are here. Okay, I'm sending the picture to you. No, there's a separate portal. Anyway, so I sent you the picture. So Lord Krishna expanded himself into multiple expansions. So here in this shloka also, Vidurji is, Maitri Rishi is continuing this expansion talk, and he's saying that the Lord, undisputed proprietor of everything, was the only seer. The cosmic manifestation was not present in the beginning. And then Lord felt imperfect. So he said that, I'm by myself. So he expanded himself into multiple expansions. Purport by Srila Prabhupada. The Lord is the supreme seer because only by his glance did the material energy becomes active for cosmic manifestation. At that time, the seer was there, but the external energy over which the glance of Lord is cast was not present. He felt somewhat insufficient, like a husband feeling lonely in the absence of his wife. This is a poetic simile. The Lord wanted to create the cosmic manifestation to give another chance to the conditioned souls who were dormant in forgetfulness. The cosmic manifestation gives the conditioned souls a chance to go back home, back to Godhead. That is the main purpose. Lord is so kind that in the absence of such manifestation, he feels something wanting, and thus the creation takes place. Although the creation of internal potency was manifested, the other potency appeared to be sleeping, and the Lord wanted to awaken her to activity, just as husband wants to awaken his wife from the sleeping state. It is the compassion of the Lord for sleeping energy that he wants to see her awakened for the enjoyment like other wives who are awake. The whole process is enliven the sleeping conditioned souls to real life of spiritual consciousness, so that they may thus become as perfect as the ever liberated souls in Vaikuntha Lokas. Since the Lord is Satchitananda Vigraha, he likes every part and parcel of the different potencies to take part in the blissful rasa, because participation with the Lord in the eternal Ras Leela is the highest living condition, the perfect in the spiritual bliss and knowledge. So here Srila Prabhupada explains how the Supta Avastha. Supta means Supta Shaktir Asupta Drak. Supta means sleeping. So there were some energy of Lord, Shakti. भगवान की दो कुछ यहाँ पे लिखा है ना, सुप्त शक्ति असुप्त द्रक. तो भगवान की दो प्रकार की शक्तियाँ हैं, एक तीन प्रकार की है वैसे तो, लेकिन दो मेन है, अंतरंग शक्ति और बहिरंग शक्ति. अंतरंग शक्ति क्या है भगवान की? अंतरंग शक्ति से भगवान अपना स्पिरिचुअल वर्ल्ड चलाते हैं.
तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड यानी क्या, तो जहाँ पे गोलोक वृंदावन धाम है, वैकुंठ धाम है, जहाँ पे भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण और अनेक अवतार जहाँ पे रहते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आध्यात्मिक लोक, जगह, आध्यात्मिक लोक। तो एक है आध्यात्मिक लोक और दूसरा है भौतिक लोक। जो आध्यात्मिक लोक है वो भगवान की शक्ति, अंतरंग शक्ति से चलता है। जैसे कि अभी ये जो है बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग में एक अलग एडमिनिस्ट्रेशन रहता है, और बिल्डिंग के बाहर जैसे सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन अलग है, बिल्डिंग का एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कोई हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल का एक अलग मैनेजमेंट रहता है, और हॉस्पिटल के बाहर जो सिटी चल रही है उसका अलग मैनेजमेंट रहता है। वैसे ही भगवान का जो धाम है उसका मैनेजमेंट कोई और देखता है, और जो भौतिक जगत का मैनेजमेंट कोई और देखता है। तो भगवान के जो धाम है उसका मैनेजमेंट कौन देखता है? तो भगवान की शक्ति। वो कौन सी शक्ति है? तो अंतरंग शक्ति। अंतरंग शक्ति कौन है? तो श्रीमती राधा रानी। तो भगवान का जो आध्यात्मिक जगत है वहाँ का सब ध्यान का इंचार्ज कौन है? तो राधा रानी है। और जो भगवान के भौतिक जगत है वो भी भगवान का ही जगत है, लेकिन जो भौतिक जगत है उसका ध्यान कौन रख रहा है? तो माया शक्ति या बहिरंग शक्ति। तो अभी ये बहिरंग शक्ति, भौतिक जगत किसके लिए बनाया गया है? तो जो जीव है, जो जीव भगवान से अलग रहना चाहते हैं, तो भगवान कहते हैं ठीक है आप भौतिक जगत में चले जाओ। जब शुरुआत में भगवान अकेले ही थे तभी तो अंतरंग शक्ति थी उनके पास, लेकिन बहिरंग शक्ति सुप्त थी। तो वो सुप्त को असुप्त अवस्था में करना था, तो भगवान ने बहिरंग शक्ति को जागृत किया। फिर भौतिक सृष्टि की रचना के लिए भगवान से ही सब एक्सपेंशन हुए, जैसे कि हमने बताया महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और शिरोदक्षाय विष्णु। तो ये सभी विष्णु भगवान में से आए। तो ये ऐसे सब विश्व का निर्माण हुआ। सवा एता तथा दृष्ट्वा न पश्यात् दृश्यम एकरत्। तो सह वा एषा तदा दृष्टा। द सीयर, दृष्टा मीन्स सीयर, ये जो है यहाँ पर ट्रांसलेशन किया है। तो सभी चीजों का, सभी भौतिक और आध्यात्मिक जगत सबका एक ही मालिक, सीयर कौन है? वो है भगवान कृष्ण। ना पश्यत दृश्यम एकरात्, अनडिस्प्यूटेड, एकरात् यह लिखा है, एक अनडिस्प्यूटेड प्रोप्राइटर। तो ये भौतिक और आध्यात्मिक जगत का एक ही अधिष्ठाता, एक ही मालिक, एक ही प्रोप्राइटर कौन है? भगवान कृष्ण। मेने असंतम इव आत्मना सुप्त शक्ति असुप्त दृक्। तो भगवान ये ही सब चीज के मालिक है। ही इज द ओनली प्रोप्राइटर, लॉर्ड कृष्ण। और शुरुआत में तो ये भौतिक जगत नहीं था, लेकिन भगवान को लगा कि नहीं, अभी तो आध्यात्मिक जगत तो है, लेकिन कुछ लोग हैं जो यहाँ आध्यात्मिक जगत में कंफर्टेबल नहीं है, तो उनके लिए कुछ करना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पे मंदिर में कुछ लोग आते हैं, तो सब कोई कंफर्टेबल नहीं रह सकता मंदिर में, उनको वो बाहर, उनके लिए कुछ अलग एंटरटेनमेंट रहता है, तो अलग जगह जाते हैं। हाँ, तो वैसे अलग अलग प्रकार का व्यवस्था भगवान ने बनाया है। तो भगवान बड़े कृपालु है, सबका ध्यान रखते हैं। ऐसा नहीं कि हाथी के लिए जंगल बनाया, जानवर के लिए जंगल बनाया, मनुष्य के लिए सिटी या विलेजेस बनाए, सबको अपने अपने हिसाब से भगवान ने फैसिलिटी दी है। इसलिए भगवान कृष्ण, उनका यहाँ पर वर्णन क्या किया गया है? तो कहा है सव एता तदा दृष्टा न पश्यत दृश्यम एकरत्। एकरत् यानी भगवान एक ही मालिक है, एक ही मालिक है भगवान सबके। तो यहाँ पे हम थोड़ा विश्राम लेंगे, फिर कल वापस चलेंगे। भगवान भगवान की बहुत प्रकार की लीलाएं हैं, उसमें से एक